बहुत अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स आए, मतलब अच्छे और बुरे दोनों तरह के इन्फ्लुएंसर्स आए अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। उसकी वजह से बट ये हुआ कि बहुत ज़्यादा लोग चाहे इम्प्रेस होकर चाहे रास्ता देखकर इस तरफ आने लगे। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ हुई। इस तरह का कोइंसिडेंस जब हम देखते हैं was I think Abhishek was telling me some 30 million or 40 million new people came into the stock market. है ना? Only in the past 3-4 years, 5 years. रोजा का मैं देखा था कि over 50% of their users, active users were first time investors. तो ये बहुत बड़ा डेटा है. Only help the Indian market in becoming more mature and efficient in the long term. So हमारे लिए I think जिस स्टेज पर हम सभी भी हम विल क्लियर इन आर 20s कोई 30s के आसपास में होगा, तो इस स्टेज पर हमें इन चीज़ों का एक्सेस मिला फाइनेंशियल एजुकेशन का, फाइनेंशियल मार्केट का। एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हमें इसके रिजल्ट अगले 10-15-20 सालों के बाद समझ में आएगा कि हमें इस स्टेज में स्टॉक बाय करने का मौका मिला। हर किसी के पास थोड़े बहुत तो उसका रिजल्ट क्या होता है हमें अगले 15-20 सालों में इसका समझ में आएगा कि हम कितने लकी हैं। कोविड में वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आज हम देखते हैं Since we like already discussed that how trading has been increasing day by day, especially in India, I think we should also acknowledge that people are taking more risks. The risk appetite of people has increased. So, like, do you think the increase in risk appetite is being glamorized too much? Like, we should take risks, then only we will make money, etc., etc. See, there are two reasons behind it, in my opinion. First one being there has been a fundamental change. There has been a financial growth which is driving this risk appetite. हमसे पहले वाली जो generation थी, they had this fear or this responsibility of putting food on the table. हमारे साथ ऐसा नहीं है. In most of the families, right, the general per capita income going up has made this big change. कि हमारे साथ ऐसा नहीं है कि we only are doing something or we only are taking up a profession in order to prove ourselves. है ना? Maybe to our parents, maybe to the society or maybe, something like that. We do not have this fear or this responsibility of putting food on the table. है ना? हमें ऐसा लगता है कुछ यंगस्टर्स को ऐसा लगता है कि घर से पैसे नहीं लेंगे या फिर ऐसा लगता है कि किसी और से आगे नहीं बढ़ेंगे। The other reason being, see, because of social media, we have seen a lot of good sides and a lot of good results of what can happen if you take high risk. When we hear a story of an Elon Musk who after selling one of his startups and getting a few $100 million, if he puts that all of that money into two of his companies, one being Tesla and the other being SpaceX, and goes back to renting his an apartment, and a few years later he becomes one of the richest people on this planet. These stories have a huge impact on today's youngsters. These people who took risks and the results were very good. They've been the stories of such people have been made so viral, they've reached everybody that we generally look at the positive side of it today's youth. So which is why everybody just likes this. तो वो हमने मूवी में भी देखा था कि रिस्क है रिस्क है इस तरह की चीजें, because as long as you do not see the bad side or the wrong side of this, you will always it seems very testosterone boost होते हैं और बहुत अच्छा लगता है. Yeah, so if we take risks, it's obvious that we might make mistakes. So, like, would you like to add on something that how beginners make mistakes when they first start trading? सबसे पहले तो क्या होता है कि जब भी कोई एक चार्ट देखता है आज के टाइम पे, कोई भी उसको लगता है कि लड़कियां सब कुछ होगा और मुझे हाँ बोलना एक्चुअली चार्ट्स देख करके ये लग जाता है कि बहुत चीज़ें इजी होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि रिस्क को एज अ बिल्डर को किस तरीके से कैलकुलेट करना चाहिए इसको कि इसको अरेंज मैनेज की तरह मिलता है कि आप एक बार रिस्क एसेस करिए, आप एक बार बैकग्राउंड चेक कीजिए, आप सारी चीज़ें देखिए। ऐसा नहीं कि आपको बस आगे से आगे तो आप चीज़ें कर लीजिए। मुझे लगता है कि मैंने स्टार्ट किया था तो एजुकेशन ही नहीं वहाँ पे जहाँ से मैं आता हूँ, तो बिगिनर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है तरीके से आप लोगों को फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो चीज़ जो लोग आपको सिखा रहे हैं सही लोगों को आप फॉलो कीजिए, क्योंकि एक ग्लैमरस साइड आपको दिख जाएगी इंस्टाग्राम के ऊपर क्योंकि मैंने इतना बना दिया किसी से मेरे पास है। लेकिन बिगिनर्स क्या करते हैं, सारी उन चीज़ों की तरफ फ्लैशी चीज़ों की तरफ जल्दी चले जाते हैं।
मुझे लगता है कि बिजनेस को मिस्टेक नहीं करनी चाहिए कि अपने प्रोसेस को ना बहुत जल्दी छोटा नहीं करना चाहिए। जिस चीज में समय लगता है उस चीज में समय लगता है। जैसे बच्चे पैदा करते हैं 9 महीने लगते हैं उसको निकलने में, बिल्कुल नहीं लगेंगे। उस चीज को कोई भी आदमी वो छोटा नहीं करता। तो सबसे पहले तो एक पेशेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है। और हमें ना ज़्यादा इस चीज़ की तरफ नहीं जाना है कि क्या चीज़ चमक रही है। हो सकता है कि चमकती हुई चीज़ हर चीज़ होना होगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि आप पूरे प्रोसेस को देखिए, ये नहीं कि उस इंसान ने इतना पैसा बना लिया तो मैं फटाफट से जाकर के सेम चीज़ कॉपी पेस्ट कर दूँ और वो चीज़ बहुत ज़्यादा जल्दी पैसा मिलती है। तो पूरा प्रोसेस समझिए क्या है। चीज़ें ग्लैमरस हो जाती है, पर बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद, बहुत ज़्यादा प्रोसेस के बाद ये हमें शुरू से लेकर दिमाग में चलना चाहिए। तब जाके बिजनेस जो है वो मार्केट में बिजनेस कम करेगा। तो ग्लैमरस कम रखना है, सेटल डाउन होना है, हम्बल रहना है, ग्राउंडेड रहना है। Thank you. So like continuing on this kind of topic, so like we have seen that sometimes retail investors underestimate some kind of risks. So can you elaborate on this? Can you share some personal experience that what kind of risks do retail investors underestimate? Okay, so from my experience, so when I started investing, it was like two parallel paths. So I was working for a fund house, so managing very big money for a lot of people, and then my personal path. So my entire journey was just a mirror image of what I was doing as a profession. Right? So for me, whatever that I have seen in the details, it was mostly around two, three things. So first was, let's say some retail investor, gets excited, he's very eager to invest, and they trade. So there is something called as business plan, right? I mean, it's not a real thing, but there might be a case where in first two, three trades, you will get good results. Right? But then that is not the problem. Problem is that gives you an overconfidence. Right? So overconfidence bias is something that I've seen in non-real retail investors. What it does is it removes your basic risk management from the entire trading process. Right? And it was the case for me also. Like it's very behavioral. It is very personal thing. Right? So I will give you an example. So this was the time when I just started, trading, learning things, doing all this data analysis. And then I was taking this trade for first few weeks. It was good. Some losses, mostly gains, very big. Then in this one trade, right, I was making a lot of good money and P&L was mostly positive. This one trade, my ego took over the entire process. Right? Was like, "Nahi, so I know this will come over. I will not put any stop loss. It has to come up, right?" And it made my P&L red. So point is, ego should not be the driving factor. There has to be proper discipline. That's what I have done, but it's very difficult to make it happen in practice. Second thing, and this is when I started my entrepreneurial journey, what I have seen. Uh, After analyzing all this portfolio, now it's very easy to analyze portfolios of different people. We have technology like ML centers and account aggregators. Just on a click of a portfolio entire history of what you have done in your demat account or maybe. So we did analysis of around 20,000 crores worth of assets, and we figured out that most of the people don't invest when it's the right time to invest. Right? So let's say 2021 was the right time to invest. The pattern shows that that's the time when people stop their activity. So again, something which is again showing up, right? So in the entire process, let's say it's a 50-50 chance of crossing a point, and every day you cross a point and you decide whether I should take long or short. Right? That is your investment strategy per se. And you have a little bit of it, instead of 50%, let's say it's 51% probability of getting it right. So that 1% edge will not depend on one day of trade. Right? It has to multiply for multi-decadal trading experience, let's say 5 years. Then that 1% of extra edge that you have because of your analysis will multiply and the results will be huge. And that only means one thing, that is discipline. So discipline is something which is for newcomers is very difficult to get into your trading routine. Discipline is that.
see, like, I'd like to add one thing to what Anupreet just said. Like, when we say that the retail investors are having a lot of high risk taking capacity and they're not trading responsibly or investing responsibly, so we are actually underestimating the wisdom of retail investors today. See, most of mutual fund money also comes to retail investors, right? It's all retail investors' money, but and today you will see that most of the people are putting 80 or 90% of their money in mutual fund के अंदर इस तरह कुछ करते होंगे. Actually, the wisdom is growing because of such YouTubers and investors. Because कि हमें सही जगह पर पैसा इन्वेस्ट करना है और इस तरह की चीजें, तो रिटेल इन्वेस्टर भी समझते हैं कि अगर हमें स्टॉक्स के बारे में नहीं पता या सही स्ट्रैटेजीज के बारे में नहीं पता तो हमारे पैसे उन लोगों के पास उसमें वो तरीका पता है. तो ऐसा नहीं है वो बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं. एक्चुअली पीपल आर गोइंग टू राइट डायरेक्शन अगर हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देखें. There's a small point. The software that we have made in our company is used to advise the ultra high net worth individuals. So there we are seeing this pattern. This point, 80% of my capital, let's say 20-30 crores of capital, would be deployed in traditional assets, and PMS, all those kind of stuff. Rest 20% is my video game portfolio, right? So they call it video game portfolio because people also need to feel empowered. Right? I mean, if you give control of your entire capital to someone, you're trusting someone too much. Right? You need some capital, but rest of the things can go to people diversified across asset classes, maybe geographies. So that's how just adding to the. And I would like to simplify it for the audience also. देखिए एक चीज होती है ये आई थिंक सबने खेला होगा. प्लीज बताइएगा एक वो इम्पोस्टर वाला गेम है जिसमें दो लोग रहते हैं. क्या है नाम? अमंग अस. तो इट इज ऑल अबाउट एन इन्फॉर्मेशन. मार्केट किस तरीके से चलता है थोड़ा आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि अनइन्फॉर्म्ड मेजॉरिटी विल ऑलवेज बी बीटन बाय इन्फॉर्म्ड माइनॉरिटी. दो लोग रहते हैं लेकिन 10 लोगों को मार देते हैं. वाई? क्योंकि जो हमारा डिटेल वो बटा हुआ है उनके पास सिमिलर इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है. अगर आपको डेटा चेक करता हूँ कि FIIs का, DIIs का, प्रोप्राइटरी जो ये बड़े बड़े इन्वेस्टर को पता हुआ एक रिटेल है जो हम जैसे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं. DIIs होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. FIIs हमारे जो अंग्रेज भाई बहन हैं एंड प्रोप्राइटरीज HNI वगैरह छोटे मोटे. तो ये क्या करते हैं आप देखेंगे जो FIIs और प्रोप्राइटरीज हैं उनकी पोजीशंस हमेशा ही मोस्ट ऑफ द टाइम सेम डायरेक्शन में एंड जो हमारा रिटेल है वो हमेशा उनका बैठा रहता है. तो ये जादू डेली कैसे हो जाता है मुझे ये समझ नहीं आता है कि रिटेल उल्टा बैठ जाता है और हमेशा FIIs और प्रोप्राइटरीज उनके अगेंस्ट बैठ जाते हैं. दैट्स हाउ सप्लाई एंड डिमांड वर्क्स. बिल्ड एंड आस्क वर्क्स. ये होना ही है. लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि थोड़ा सा अगर हम इन्फॉर्म्ड है मार्केट में, हम अगर इमोशनल डिसीजन लेते हैं का एक माइंडसेट में होता है. मैंने अपने अंदर भी बहुत ज़्यादा देखा है जब तक मैं पैसा नहीं बना रहा था बाजार से. एंड देयर आर डेज जब आप रहते हो हर किसी के दिन होता है ऐसा नहीं कि अचानक से चीज़ें आपकी चलने लग जाएंगी. मार्केट में टाइम लगता है. सो मैंने ये चीज़ देखी थी कि मेरे दिमाग में ये था कि अगर मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है तो शायद हम नीचे आए. हम बहुत लोग कोशिश करते हैं कि हम ट्रेंड की डायरेक्शन में रहें, हम इन्फॉर्म्ड रहें. हम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं न्यूज़ वगैरह से. जब मार्केट अगर नीचे जा रहा है तो हमें इसका बॉटम पकड़ेगा. हम लोग बहुत क्लियर चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट में, या तो बिल्कुल ही नीचे मिल जाए या बिल्कुल ही ऊपर मिल जाए. बट वो हमारे नसीब का नहीं. हमारे नसीब का ही सिर्फ और सिर्फ बीच का हिस्सा में मिल जाए. अगर हमें पता है कितना सुना है और कितना हमें मार्केट से लेना है तो हम उतने इन्फॉर्म हैं. जो अनइन्फॉर्म्ड मेजॉरिटी है वो इसी तरीके से उल्टा बैठती है क्योंकि उनकी साइकोलॉजी मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है. तो मुझे लगता है कि रिटेलर्स को ध्यान देना चाहिए कि ना बॉटम पकड़ना है ना टॉप पकड़ना है. बीच का हिस्सा हमारा कोशिश करनी है कि हम इन्फॉर्म करें. न्यूज़ से नहीं बल्कि रियल एजुकेशन जो आपके पास खुद है, जो आप खुद ढूंढ रहे हैं. ऐसा नहीं कि आप किसी के पास जा रहे हैं, न्यूज़ आपके पास आ रही है, इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो वाली जिसको आप खुद ढूंढ रहे हैं. उस तरीके से अगर हम इन्फॉर्म करेंगे थोड़ा तो वो बेटर डिसीजन हम आपको जनरल थॉट भी होता है सिंस यू आर अ फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडर कि 90% लोग लॉस में चले जाते हैं. ये गलत है. 90% नहीं है लॉस में, 99 है. So like would you like to add something कि इससे डरना नहीं चाहिए. You need to be educated and if you do it
correctly, रजिस्टर my करने mind गया of था thinking. बाइक और फ्यूचर में ऑप्शन दोनों रजिस्टर चीज करने के है। बाद वहाँ डैशबोर्ड में ये वहाँ सही कॉमेडी है। पर नाइट मैं था। क्यों ये बोल रहा वहाँ हूँ, फिर कॉमेडी नाइट का रजिस्टर फ्यूचर में करेगा ऑप्शन है ना, पहले अनलेस तो उस करने के क्रिएट कर पहले देता है, अनलेस और अनटिल आपके पास राइट इन्फॉर्मेशन है। देखिए मार्केट इज नॉट लाइक कि हाँ आपने 8% डाला तो आपको डबल कॉपी हो कर जाएगा। देना हो जाएगा। बट बहुत सारे लोग जो रोल आते नंबर हैं डालना मार्केट था में वो यही नहीं वहाँ पे करेगा। कॉमेडी देयर आर नाइट का सो मेनी पीपल